the things in a different perspective. See, every Sunday, what I try to do is I try to make look things like and try to give them the feel how the things are moving in our life. Okay. One question, what like I'm very continuously getting asked again and again and again, is that how our human body works. That's one thing which everybody is trying to ask me again and again and again. And somewhere there's a confusion onto the thing that human body is a machine, or is it a God's miracle, or what exactly is like the thing in it. Just based on astrology, I'll try to go for thing because many people are requesting to go in Hindi also, so I'll try to mix Hindi and English today onto the whole thing. See, what is happening is our body is a very complex machine, very complex machine. One machine which requires lot of oiling in it, lot of oiling. More we use it, the better it gets. When I use astrology to see this whole machine, I always say this machine runs from B to D, birth to death. A, I generally put when we are in the womb of our mother, and E, I put as enlightenment, which goes beyond death. So what is left in between B and D is C, the letter C, which I say is choice or choices. So whatever choices we make in our life decides the life between B and D, that's C. This C, you can put it like karma also. What people ask me, keep on asking me question on related to karma, what is karma? So that C is the choice, or that is a karma. So karma is what? When we take conscious decision and consciously do some act with our conscious mind, not subconscious mind. So with our conscious mind, when we do something, there is a certain effect which will be delivered on the life in between B and D. This is karma. So astrology defines from point B to point D the complete effects when you keep on doing X or Y or Z kind of karmas. So that is what is astrology is based on. People, when come to us, to astrologers, they think that we are gods. We know everything. No, we are not gods by any chance. We are just normal human beings who are just trying to read a certain movement of your life or what you live between B and D. And they say, you are astrologers, you must be knowing everything what will be happening tomorrow. Trust me, as a human, even if we are astrologers, we don't even know 100% what is happening currently today. To leave alone what will be happening tomorrow, knowing is beyond anybody's capacity. Because again, like I'll come on to the thing from where I started, we have a complex machinery created by God, and this complex machinery, how it will be behaving, how it will be working, we can only try to guess
with a certain mathematical way of calculation, very based on scientific thing, how it will be working. There are certain more things to it. Certain more things to it. One more thing to it is that most of our humans, we tend to become overconfident. Okay, we tend to become super overconfident, and this overconfidence generally creates most of our troubles in our life. When we start behaving that we know everything, that is a period when all the troubles start coming. So what I say, self-doubt, or I will even say a certain amount of fear for tomorrow, or a certain amount of fear for the past is good. Certain. Again, I'm saying certain only. But else, past or future, both, if we try to know or try to work upon, that will only deliver to us fear, or it will give us only thing which we call overconfidence. And overconfidence, whatsoever we try to do, will always harm us. So what will happen in the next moment, that certain doubt should always be there, and that certain fear should always be there, so that we can develop the present, so that we don't do the mistakes in the future. So that living with that certain fear is really good. So that's the reason I say don't rush to the astrologer just for everything, because if you will keep on rushing, some answer you will keep on getting, and those answers will give you the overconfidence, and that overconfidence will surely kill you before you reach your D point. It will surely kill you. So what is this human body? This is a complex machine made from 5 elements. A simple 5 elements which we keep on studying in astrology also. Generally in Vedangas we know about also. Is fire, air, earth and water and space. Now there's a bit of coincidence thing. If so many astrologers I can see who are live now on other channels, is that all the 9 planets can be divided into these 5 elements. But there's a very strange, very strange thing. None of the signs, that means from number 1 to from Aries to Pisces, all the 12 signs and including 27 nakshatra are divided only in 4 elements: fire, earth, air and water. The 5th element, ether or space, which you say, is missing in all the nakshatras and including the signs. So if astrologers are listening to me, they will understand that all the signs, all the 12 signs are owned by some planet or the other. Rahu Ketu not given any sign to them. But nakshatra, 27 nakshatra, 3 each are given to every planet. But coincidentally, all the nakshatras and all the signs, rashis, are divided in only 4 elements, not the 5th element. The 5th element is missing. So it's a very strange coincidence. Try to find it out. There's a lot to learn with this new thing which I'm telling you about. So how we work on the healing levels? Healing level is when we work to balance our energies. Very common terminology since few days I'm listening, and you must be hearing that like a lot of deaths or people are getting upset or suicide news is very commonly coming at present. Very commonly. Even you will see accidents also, thing also.
in my earlier sessions, I've defined like what is the kind of placement and which is happening in mundane and how it's like influencing us and how it's like working upon us. So this is happening very, very commonly. So what happens is how we heal ourselves. How we heal ourselves is if any of the energy of a certain thing goes down, we start covering it up with our own efforts, which is conscious decisions or our karmas to balance it. When we have balanced thoughts and when we start living in the present and thinking that we don't know about tomorrow, but whatever will come, we'll accept it with open hands and stop fearing or stop regretting whatever we did yesterday, and we forgive our mistakes, forgive ourselves, forgive our soul, and that's the time we start healing. Another common question I'm getting nowadays is, which is a very key word everybody must be listening to, is meditation and spiritualism. If I will talk about, like, say 30 years from now, I used to only hear about prayers, surrendering to God, helping others, even sometimes selfishness also. I will not say all the people were like angels around, but that's what I used to hear about. Now, but suddenly, nowadays I'm hearing the words, Guruji, I want to become spiritual. I've started learning occult, meditation I want to do. So what is happening is people are now confusing with the new jargons too much and they are trying to build the life with the internet university. This internet university, who's right and who's wrong, nobody knows. From where they suddenly get a knowledge and they try to portray a certain knowledge or try to explain something out of that internet university, nobody knows. From last 10 days, I will say, like, many of my students and many people are getting me connected to somebody who calls himself as a time traveler. Try to search about this person. Maybe he is. I'm not trying to uh, go against his existence or anything. Sorry, he's a man from the future if he is. And they are trying to make me connect with that person. And that person, when connected with me, claimed that there are 4 time travelers present in currently. There were 10 people who were given this like task to come back and start giving us the predictions for the futures, and he says that he can prove that by giving some advanced predictions that he is a time traveler. It was very interesting concept, very interesting concept that he told me few things. Sounded very logical though. Okay. Maybe imagination or not imagination, I don't know. But whatever he tried to claim sounded very, very logical. So maybe he is, I don't know his existence. One thing he said, that we are the people which we will be coming to know in 2023, he says, is that we are the aliens who have reached the earth, and we are the ones who killed dinosaurs, not any asteroid. And we came from some, he was just telling me some light year calculation. I can't even imagine so far. Okay, from where we all came. And we carried a certain number of species. He was giving me a certain count also, and count was like very daunting kind of count. 4 million something and 91 3, and that was very, very precise count he was giving me. And when we landed, because of that impact, how many species were lost also,
And after that, we killed the dinosaurs and made the place habitable for us. That's the one thing he claimed. Then, to prove me that he's a time traveler, I will not say like I don't want that my words start spreading any kind of fear or anything. I can see a lot of questions coming on to out here also on the same topic. So he gave me certain predictions for 2022. Okay, certain predictions to prove that he is a time traveler. He has given me one prediction for 14th of February, Valentine's Day. Good luck to all of you. So something what he has predicted me like for 14th of February, whether it comes true or not, I'm not too sure. He predicted me certain other things. Something about Queen Elizabeth also he predicted. Then he predicted about one celebrity who will be reappearing this year, who we think is had died a long time back from the music world. He said. Okay, he gave me the date also when he'll be appearing and telling the world that he actually did not die. He just vanished or was living somewhere. He was telling me a long story of it. Another version, he connected me with another time traveler. First thing, my question to him was, why you are connecting me? And why you want to speak with me? And why you have come to give us the predictions? If you there is something necessary, tell us. If somebody is coming back from death and like from the other world after dying, or somebody will be dying, or some kind of thing will be happening, if you are not saving the life, why you want to connect with me? He says you understand the calculations. I don't know how me. I'm not God. Sorry, I'm not trying to portray. Sorry if I'm doing any mistake by telling you this story. And he said that telling you because you understand the calculation very well, and you understand how the humans and things lives work, and you understand the calculation of existence of humankind. I actually don't know from where he got this idea, that I know or not. I'm first trying to find the reason and my existence first. I know he was talking about humankind are there. In that humankind, he said that Kali Yuga is already over. I don't know what calculation. Maybe some people also must be knowing about the calculation patterns of it. Okay. So he said to me that Kali Yuga is already over. And to prepare us, again, those are not my thoughts. Those are not my thoughts. What he told me, I'm just telling you the same story back. Nothing more than that. So what he told me is that a Kali Yuga is already over and Satyuga had already begun. So this is the advent of movement of human race from one yuga to the next yuga. So to prepare our bodies, they are giving us this vaccination, which they continuously will keep on giving, so that like we are able to go for the transition easily, and whoever has to wipe out will wipe out now. I know from where the words came. I'm telling you the story. Whether it's imagination or the reality, nobody knows. But surely the story was telling me, or maybe the reality was telling me what he was, that we are moving towards the next. And the crux of why I was telling you this whole story of this time traveler who tried to contact me and to prove that he's a real time traveler kind of thing is the simple reason that a certain fear or a certain curiosity was awakened within me. That certain curiosity was, what will happen now tomorrow? Is it the reality? What he is telling me? Should I also start preparing myself for tomorrow?
What if this will happen? Should I try to find out what will be happening tomorrow? And you know what my first thoughts were? Should I tell my family people? Should I call other astrologers, the main celebrity astrologers who are my coincidentally, I'm glad to have them as my friends in my life. Should I tell them to find it out about it? What is exactly the truth? See, the final thing is we don't know what is the truth. What is coming up tomorrow, we don't know. But for 1 hour, I was perplexed by the thought. It was very disturbing, very disturbing. It was giving me two sides of the thing. One side, I was feeling I'm blessed that somebody told me, and now I know, and I'm like, I don't know what all I was thinking that time. And on the other side, I was feeling that I'm so helpless, I can't do anything. And why he told me. In this like overconfidence and fear, for 1 hour, I was not living. In fact, truthfully speaking, I was dying with certain question marks in front of me and certain fears with me. So, what was there? Was it spiritualism? Was it meditation? Was it like chakras awakening in me, or what? Like, I don't know what. Everything was going all jumbled up. All jumbled up. But the good thing happened, it taught me a life lesson that if I keep on thinking about future too much and trying to know what will happen tomorrow, end of the day, I'm stopping to live today. Do I want to die today? I don't think so. Anytime you have doubt, or anytime when people come to me with like all these feelings that Guruji, I want to die, I'm so fed up, I want to die now, I want to leave this world. Had we ever asked our body whether our body wants to die or not? Minds, things, whatever we are maybe trying, we ever asked our body whether you want to die? If anybody of you have a doubt, I will just say like close your nose, close your mouth, and just try to hold your breath and let your body die. Trust me, after some time, your body will be like pushing you away, and that it will say, I don't want to die, I don't want to die, I don't want to die. So when your body don't want to die, why you want to kill with your emotional thoughts? Is this the right thing to do? So we should start living in present rather than with the fear and trying to know what is coming up tomorrow. So if our present is disturbing us in certain way, we should start healing it with different things. Healing with different people, different remedies, different things. That's why I keep on repeating, we should start living astrology. So what is living astrology? Living astrology is understanding that like our body, everything is made from 5 elements, nothing else, just 5 elements. The balancing of those 5 elements, and what I say, breaking the code of those 5 elements to balance them in the best possible way. I will not say it's 100% possible, but in a best possible way is the remedy. So we can use certain artificial means, we can use a certain like mantras. Some people are too over intelligent, again I will say they can use the tantras or yantras. I don't know, I only use till mantra. My limitation goes till there. And using them, we try to balance the whole thing. Because again I say, it's about balancing the energy, is about healing. I'm just getting a few questions out here. Too much like Hindi. नहीं मैं हिंदी बोलता हूँ, sorry.
आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, अनपढ़ चीजें आप जो भी लिख रहे हैं, आई लाइक एक्सेप्ट एवरीथिंग, आपकी हर चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको ऐसा करके थोड़ा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, हमारा एक शरीर एक 5 तत्वों की बनाई हुई एक यंत्र है। वो यंत्र और मशीन, मैं दोनों को मिक्स करके बोलूंगा ताकि कुछ हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों थोड़ा समझ पाए इस चीज को लेके, बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सॉरी, आप गालियां तक लिखना शुरू कर चुके हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, चिंता मत करिए, मैं इंडियन भी हूँ, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैं दोनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो 5 तत्वों को बैलेंस करना और उन्हीं को कॉन्शियसली बैलेंस करना। कॉन्शियस मतलब जब हम दिमाग से सोच के जान को, अपने जान पहचान को, अपने आप को अपनी समझ के साथ, गलती से नहीं, समझ के साथ जब हम एक चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो हीलिंग हो जाती है। और वही मैं चीज एस्ट्रोलॉजी में हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमारी इस एनर्जी को बैलेंस करने से हमारी पूरी की पूरी जिंदगी अपने आप बैलेंस होने लग जाती है, और जो जो हमारी कमियां होती हैं वो कैसे ठीक होने लग जाती है। इसी चीज को मैं आज थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन अभी अभी मेरे सामने लगातार, बल्कि 3 या 4 लोगों ने एक साथ पूछ लिया कि ऊपरी हवाओं के बारे में, और वी टॉक अबाउट लाइक पोजेस्ड, और जब हमें कहते हैं कि कोई आत्मा और चीजें, उसके बारे में क्या चीजें हैं। द पॉइंट, इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि होता क्या है, व्हेन सम नेगेटिव एनर्जी, कुछ जिनको हम ऊपरी हवाएं समझने लग जाते हैं, वो जब नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज को कहीं ना कहीं हिलाने या डिस्टॉर्ट करने लग जाती हैं, और हमारे एक एक सीधा चलने के रास्ते को लेके okay, I'll try both ways. अब आधे, now the people want in English, and now the thing is, I'll just try to keep sessions like divided. I will make like from next Sunday Hindi and 2 sessions. When like negative energies, हमारी existing energies, हमारी बॉडी के 5 तत्वों को कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं, यानी ऊंच नीच क्रिएट करती हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस है 5 तत्वों का, उसको इन्फ्लुएंस करने लग जाती हैं। मतलब इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब है कि वो उनको हिलाने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। ओके, इसको हम कितनी बारी ये समझ लेते हैं दैट हमारे ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, या हमें कैप्चर कर लिया है, और हम वो तंत्र और वो सब चीजें कराने निकल पड़ते हैं, और हम ये समझने लग जाते हैं कि हम दूसरी एनर्जीज को अपने आप से हटाने के लिए हमें वो जादू चीजें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट द ट्रूथ। इसमें अगर हम देखें, नजर लगना, और समटाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इवन मेडिकल टर्म्स जैसे ऑटिज्म और ड्यूअल पर्सनालिटी, ये सब चीजें मिक्स हो जाती है। ये कुछ भी नहीं है। व्हेन वी बैलेंस आवर सेल्फ, आवर बॉडी, आवर 5 एलिमेंट्स, आवर पॉजिटिविटी, और वो यूज करते हैं हम सारे 5 एलिमेंट्स को, और हम उनको बिल्कुल कॉन्शियस वे में, यानी सोच समझ के यूज करते हैं, हम अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हैं। Now somebody is asking me like to explain that in astrological way. I'll explain it in an astrological way also. Astrology says when moon, Rahu and Saturn, okay, they make a certain connection,
our imbalance starts happening. Okay, in transit, in dasha, in conjunction, when these certain imbalances start happening, तो उन imbalances को कवर करने के लिए हमें उसके opposite energies को strong करना पड़ता है. अब क्या हो गया, एक हमारा बहुत ज्यादा ऊंचा चले गया, स्ट्रांग हो गया, दूसरा हमारा बहुत वीक हो गया. जो वीक है हम उसको स्ट्रांग करते हैं, तो वी कॉल इट 1:7 रेशियो. अगर मेरे रिलेशनशिप में परेशानी हो रही हो, एग्जाम्पल के लिए मैं सबको एक ही चीज का सलाह देने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी बॉडी को, यानी हमारे फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग करना शुरू कर दीजिए. बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी. रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा. तो आप अपने आप को इंप्रूव करने लग जाइए, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने लग जाइए, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. जैसे बहुत लोग आते हैं, मेरे प्रोफेशन में बहुत परेशानी चल रही है, मेरे काम में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, मेरे को उसके बिना मेरे को ये, मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम मेरे को बार बार आती है ऑफिस को लेके. बहुत सिंपल चीज है, फोर्थ हाउस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए. फोर्थ हाउस मेरा क्या है, मेरी खुशियों का. आई स्टार्ट फोकसिंग कि मेरे को क्या क्या चीज खुशी देती है, या मेरे को अपने घर के ऊपर बड़ा अच्छा आराम, और मैं उसमें अपने लिए एक मैं ध्यान देना शुरू कर देता हूं. तो मेरा 10th हाउस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है. आई एम गेटिंग अगेन टू मेनी डेट ऑफ बर्थ. Aquarius, somebody has written, tell me about Cancer, Sagittarius. मेरे ख्याल से वो सारे 12 साइंस कवर हो चुके हैं, but we are not into prediction session. We are just trying to understand how the things work and how we can use astrology to balance our lives so that we can get the deliverance of whatever we are like seeking out of it. So we are trying to understand that how astrology is part of our lives. How astrology we use to change the things around us. Thereby I'm just trying to give all the examples around it. तो करंट जो एग्जाम्पल जो मैं देने की कोशिश कर रहा था वो स्पिरिचुअलिज्म का था, और साथ ही साथ मैं आंसर दे रहा था जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी पोजेस्ड हो गई है, या हमारी चीजें हमारे कंट्रोल से जा रही हैं, या हमें नजर लग रही है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ वेरी स्मॉल रेमेडीज रिलेटेड टू इट. नजर लगना क्या होता है, जब हमारी खुद की बॉडीली एनर्जीज वीक हो जाती हैं, तो किसी का कोई भी हमारा को नेगेटिव तरीके से देखने से हमारे को कोई ना कोई एडवर्स या नेगेटिव इफेक्ट्स होने लग जाते हैं. तो उनकी जो एनर्जी है वो हमारे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लग जाती है. तो दैट इज बेसिकली नजर लगना. ओके, you're asking this question again and again. Aquarius are not introverts. Okay, Aquarius are more fluid. So just relax. A sign is just 25-30% of our personality. And the signs which we look in Western astrology, like Aquarius, Sagittarius, things, are not the signs we look in Vedic astrology. In Vedic astrology, we look at the ascendant signs and we look at the moon signs. That's a different calculation altogether. So today I'm trying to go on a generic thing. If you have any of the questions, you feel free. You can DM me, direct message me on different platforms, because you are like, we are live on at present 9 platforms out here, and you can just DM me, my team or me, or wherever possible. We will try to answer as many questions as possible. So don't worry, but don't send us date of birth. We are not doing consultations. We will not do individual predictions. But if you have questions like regarding anything is going wrong, or any kind of remedy you need the suggestions about, or you have a generalized question about astrology, or how
something like heartbreaks, depressions, some medical troubles, anything, how we can try to change the things for the good. I will truly try, like, make the efforts to answer them as many as possible, because I think we already have around a few thousand comments which are like running non-stop everywhere, and that's what I'm just trying to see it on all the screens all together. So, and that's our basic purpose. See, basic purpose of my sessions on Sunday is that we can try to touch the soul of people and try to explain them that how we can use astrology to balance the energies in our lives and how these things work upon us. That's the basic efforts I'm just trying to do. And you will understand that astrology is in everything, because everything is made from 5 elements. And when we try to balance those elements, our life automatically becomes a bliss and happiness. Egos vanish, fears vanish, depression vanish, and we become very peaceful. What is our purpose of our life? Purpose of life is to be peaceful, joyful, happy, content, for which many other words are utilized. Surrender, work upon it, connect with God. So spiritualism, meditation, even like I will say materialistic karmas is all a way to connect with different energies. That's it. I'll be explaining step by step on all these things. So be ready with questions. Send me the direct messages of questions. Surely in the next session, I will pick those questions and I will answer on them. Whatsoever is possible with me in my capacity about it. And that's what I'll be doing. You want to ask any question? Go ahead. I'll just try to answer for last 5 minutes as many as possible, and then after that we will just end today's session and we'll keep all the answers for the next. Yeah, go ahead and ask. You can type and send, or you can ask anything. Yeah, Nisha, go ahead, ask. You can ask. Go ahead, ask here. Yeah, ask. Sir, my sister-in-law yesterday said कि उसको ना वो नजर आ रहा था, सारे जो एक्सपायर कर गए हैं लोग, उनको वो उसको खिड़की से सब आते नजर आ रहे थे. एंड एक्चुअली में ये होता है कि ये माइंड का गेम है, एंड उसका रेमेडी I'll explain it to you. रेमेडी में नहीं समझाऊंगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि मैं तंत्रा और उस सब में चले गया हूँ. I will just try to explain होता क्या है. What we say, or what our Vedas and our things what keep on telling us, that there are more worlds beyond the world we are in. There are 7 layers. कभी हम जिनको हम 7 चक्रास को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, but there are 7 layers. So what happens is nothing dies in this world. We only change our form, which I keep on repeating again and again. So when we change our form, that means from we leave the innermost circle. तो अब just imagine कि ये imagine करिए, ये एक बॉल है जो सबसे छोटी है, फिर उसके बाद एक उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, ऐसे करके 7 बॉल्स हैं. जो सबसे अंदर वाली बॉल है उसमें हम खुद बैठे हुए हैं. ठीक है. अब वो जो सबसे अंदर वाली बॉल है उसको ऑटोमेटिकली कुछ नहीं पता उसके बाहर वाली बॉल में क्या हो रहा है, या उससे ऊपर में क्या हो रहा है, या उससे ऊपर क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम सबसे अंदर वाली बॉल में है. अब इस अंदर वाली बॉल से अब उससे ऊपर वाली बॉल में आ गए, तो आपको उससे ऊपर वाली बॉल में जो हो रहा है वो भी पता है, और जो उससे अंदर वाली उसके ऊपर अंदर जो आप जहां थे वहां वाली बॉल में आ गए तो आपको उसके बारे में भी पता है. तो इस तरीके से 7 लेयर्स हैं हमारे पास, जिसको हम धीरे 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 जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म या चीजें या उनसे एटलीस्ट कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कम्युनिकेशन या कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्ट बने. तो कुछ कनेक्ट हमारे कॉन्शियसली बन जाते हैं, कुछ कनेक्ट हमारे सबकॉन्शियसली बन जाते हैं. जब ये हमारे कनेक्ट नेक्स्ट लेवल से बनते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारी बॉडी एक वाइब्रेशन एलिमेंट्स क्रिएट करती है. वो वाइब्रेशन
एलिमेंट्स जिसको हम वर्ड देते हैं हेलुसिनेशंस भी कनेक्ट क्रिएट करती है, जो आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है कि हम ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ड्यूल पर्सनैलिटी मीन्स आजकल मूवीज भी बहुत सारी आ गई है। आई सॉ वन मूवी अभिषेक बच्चन एंड नाइस मूवी, वेरी गुड एक्टिंग ही डिड, कि वो उसी का ही फ्रेंड बन जाता है और उसका पाँव खराब है और वो ठीक हो जाता है तो उसका पाँव ठीक हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब मेरा पाँव खराब है, मेरा कब पाँव ठीक है। एक मूवी मैंने देखी थी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज तो वन मूवी आई सॉ विद्या बालन वाली, अचानक उसको एक दिन एक पूरी लैंग्वेज आ जाती है। तो दीज आर लाइक व्हाट आर द कैरेक्टर्स दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग, जो हम एक चीजों को इमेजिन करते रहे और एक चीजों को हम समझने की कोशिश करते रहे। एंड में हमारे को एक चीज समझ में आई कि पूरी की पूरी दुनिया, जिसको हम ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, वो हमारे अंदर ही है। विच आई कीप ऑन टेलिंग एवरीबडी कि अगर हमें सच में भगवान ढूंढने हैं ना, तो हमें अपने अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। द सेम वे जब हमारे को कहीं पे भी एक लेवल ऑफ वीकनेस डेवलप होता है, या फिर कोई भी एक दूसरी एनर्जी या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का कनेक्ट भी हो सकता है कुछ, या फिर कुछ पॉजिटिव एनर्जी का, कुछ बड़े गुरु आके हमें टच करें या आशीर्वाद दें, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्ट भी हो सकता है, या नेगेटिव एनर्जी का कनेक्ट होता है, तो हमारी बॉडी एक तरीके से बिहेव अलग तरीके से करती है, वेवलेंथ अलग देती है। वो वेवलेंथ जब हमारे नेक्स्ट सर्कल से कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ लेवल ऑफ हेलुसिनेशंस प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे एक हिडन डिजायर्स को भी जगाती है। तो हिडन डिजायर्स में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इमेजेस होती हैं वो सबके सामने आने लग जाती हैं और हमारे सामने आने लग जाती है। तो वो जो सेकंड ड्यूल कैरेक्टर है ना, वो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक सोया हुआ एक इमेजिनेशन है, वो जाग के हमारा प्रेजेंट बन जाता है। तो व्हाट कैरेक्टर्स यू आर टेलिंग मी कि जो उन्होंने देखा, योर सिस्टर और थिंग, तो वो उन्होंने के सामने वो एक जो उनके दिमाग या उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो उनके पूर्वज जो चीज या उनकी चीजें वो उनके सामने उनके प्रेजेंट हो गए, बिकॉज वो एक कनेक्ट बनाने लग गए उस अपनी सबकॉन्शियस सोई हुई मेमोरी के साथ में। अब वो कितना असली है कितना नकली, आई विल गिव यू द एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द साइंस सेज in our dreams we can only get the character or we can see only the faces of the people whom we have seen in real life, चाहे वो 1 मिनट के लिए देखा हो चाहे 1 सेकंड के लिए देखा हो। our mind don't have capability to create faces, हमारा माइंड फेसेस नहीं क्रिएट कर सकता। तो नॉर्मली आपने देखा होगा अगर हम घर में हिंदी बोलते हैं तो हमारे सपनों में भी हम हिंदी बोलते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे सपनों में भी इंग्लिश बोलते हैं, और कितनी बारी अगर हमें कोई फ्रेंच या कोई ऐसे वर्ड्स या कोई चीजें सुनाई देती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में माइंड के अंदर या हमारे एक थॉट प्रोसेस के अंदर वो कुछ एक ऐसी वॉइसेस होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारा बैक कनेक्ट बनाते हुए आती है। तो इट डज नॉट मीन कि जो उन्होंने देखा वो असली है या नकली, वो एक कॉन्शियस माइंड जब बॉडी के अंदर की जनरेशन है, वो जो किसी और एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करने से। तो इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों की बात करते हैं, यानी हम जो कर्म लेके आते हैं, जो कर्म हम इकट्ठे करके लेके जाते हैं। संचित मतलब इकट्ठा। तो जो दोनों के जो बीच का यानी बी और डी का जो पार्ट होता है ना, वो हम बीच में रहते हैं। तो जो हमारे जो पहले के प्रारब्ध कर्म है, बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग फॉर्म, तो आज जो हम आए वो भी हम कहीं से फॉर्म चेंज करके आए, कल यही फॉर्म चेंज करके हम कल कुछ और हो जाएंगे, पर क्या होंगे मेरे को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। बड़े महात्मा या लोग या वो बोलते हैं मे बी दे आर राइट, मेरे को नहीं पता वो भी सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। तो वो जो हम प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं, जो हम कर्म जी रहे होते हैं, जो या फिर हम इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनकी जो वाइब्रेटिंग एनर्जीज होती हैं वो हमारे किसी न किसी जो प्रारब्ध कर्म से या वो थॉट प्रोसेस जो हमारे अंदर कहीं से पुराने रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर लेते हैं। इसी के लिए हमेशा, क्योंकि ये जब हम एनर्जी बोलते हैं, ये किसकी एनर्जी बोलते हैं हम, ये शिवा की एनर्जी बोलते हैं।
जब हम शिवा की एनर्जी को बोलते हैं तो शिवा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा या तो डिस्ट्रॉयर की एनर्जी डिस्ट्रॉय करने के लिए लेते हैं, यानी उसी हाउस के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर उसके ऑपोजिट यानी नारायण की एनर्जी को यूज करते हैं। जब हम इन दोनों एनर्जीज को ट्राइंग टू बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। तो जब उन्होंने देखा तो उसके पास हमारे पास दो चॉइस होती है। एक हमारे पास कॉन्शियसली चॉइस है कि हम अटैक करें और उन थॉट्स को रोकें, हम भगवान का नाम यूज करें, ये करें वो करें, ताकि जो भी हमारे थॉट्स हैं हम उनको भगाने की कोशिश करें। नहीं तो सबसे इजियर तरीका ये होता है कि आप सरेंडर करिए और उन एनर्जीज को एक्सेप्ट करिए, वो आपके अंदर जहां से आई है वहीं जाके मर्ज होके सरेंडर होके हो जाएंगी। तो होता क्या, कई बार जो मैं आपको एग्जांपल मूवीज का दे रहा था, आज मेरे को लग रहा है मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी बन गई है, मैं अचानक एराटिक बिहेव करता हूं जब मेरा साथ कोई भी चीज ट्रिगर करती है, गुस्सा आता है, या फिर अचानक कोई चीज खाने से ट्रिगर हो जाती है, या फिर मैं किसी घर में या सिचुएशन में जाता हूं तो मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी ट्रिगर हो जाती है। तो जो वो ट्रिगर हो जाती है पर्सनालिटी, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सबकी होती है, किसी की इमेजिनेशन में होती है, किसी की थोड़ी कॉन्शियसली हो जाती है। तो व्हाट इज द वे, वी सरेंडर टू इट, सरेंडर टू इट, ठीक है भाई हो रही है, एक्सेप्ट कर लो, वो जहां से हुई है वहीं पे मर्ज हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर मैंने उसको कॉन्शियसली लेना शुरू कर दिया वो बड़ी होने लग जाएगी, जो बाहर नहीं भी निकला वो भी निकालना शुरू कर देगी। तो उसके लिए बाद हमारे पास फिर क्या तरीका बचता है, उस पर अटैक करना। फिर वो साइकाइट्रिस्ट और डॉक्टर्स और दवाइयां और हमारी रेमेडीज सबको बीच में घुसना पड़ जाता है डायरेक्ट अटैक करने के लिए। तो इजीएस्ट तरीका जो होता है, जो इजीएस्ट रेमेडी हम सबको कहते हैं कि आप सरेंडर करिए, उनके नाम का एक दान उठाइए, किसी को दान दे दीजिए, गरीबों को दान दे दीजिए, उनके नाम का एक दिया जला दीजिए। वाई दिया, दिया इज अ सिनोनिमस ऑफ सन। ओके, व्हेन वी डू इट विद मस्टर्ड इट बिकम्स ऑफ गुरु। ओके, लिक्विड इज मून, कॉटन इज वीनस, और क्ले का दिया होगा तो क्या है, मार्स। जब उसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा, राहु। जब उसमें से धुआं निकलेगा और चलेगा तो वो क्या होगा, केतु। क्योंकि हर चीज हम कॉन्शियसली विद माइंड और चीजों से कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे बुध। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम सरेंडर करके शांत कर देते हैं दिया जला के। तो ये इसकी इजीएस्ट रेमेडी होती है जब भी हमारे को ऐसा लगे कि कोई एनर्जीज हमें किसी लेवल पे डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इस तरीके से उनके नाम का दिया जला के सरेंडर कर देते हैं। और नॉर्मली हमेशा खाने की आइटम या कोई ऐसी चीजें, क्योंकि वो कोई डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हो भी सकती हैं, अगेन आई एम सेइंग नहीं, हम कोई एक अच्छी चीज उठा के दान में हम दे देते हैं, ताकि एक चीज के लिए हम शांति का पाठ करके हम सरेंडर करके अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इसका easiest remedy है। लास्ट 2 मिनट्स, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप भेज दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ कोई आईएएस बनेंगे या किसी की शादी होगी, कोई आर्मी वाले का, यही सब मेरे साथ क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो कोई किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो गो हेड एंड लास्ट। हाँ, या गो हेड। आपने बोला था 5 एलिमेंट्स में लाइक प्लैनेट्स को सिर्फ 5 एलिमेंट्स मिले एंड नहीं, प्लैनेट्स को 5 एलिमेंट्स मिले हैं, राशि को और नक्षत्र को सिर्फ 4 मिले। Correct. ऐसा क्यों, like why did you say that? See, this is what I will suggest. Try to read about it. Next session में पूछना, मैं जवाब जरूर दूंगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं दूंगा। But एक यूनिक एलिमेंट I was just trying to tell to everybody कि हमारी कुछ जो ये साइंस है, जो हमारी ये पूरी टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, ये कुछ रियलिस्टिक एलिमेंट्स पे या रियलिस्टिक थ्योरीज पे बेस्ड है। नासा ने आज हमें बताया अर्थ और सन का डिस्टेंस, हमारे हनुमान चालीसा ने हमें बताया जुग सहस्त्र योजन पे भानु, उसने डिस्टेंस हमें पहले ही बता दिया। आज गूगल मैप ने आके हमें बताया राम जी आए थे या नहीं अयोध्या तक। तो गूगल मैप के अंदर जब मैंने डाल के देखा तो मेरे को पता चला कि वो पैदल चल के आएंगे तो 20 दिन लगेंगे। तो अयोध्या में जब उन्होंने
दशहरा होता है और दिवाली होती है 20 दिन, ऑटोमेटिकली उसमें से निकल आए। जब हमारे को ये पता चला जी, जब हमारे शिव कहते सती को लेके जा रहे थे और विष्णु ने जी ने अटैक करके उनके टुकड़े करे और जहां गिरे वो शक्तिपीठ बने, तो बड़ा इलॉजिकल लगा उस टाइम। लेकिन जब हमने उठा के पूरा डायगोनल बना के देखा तो पता चला सारे शक्तिपीठ एक लाइन में आ गए। एक अजीब सी स्टोरी जो बहुत लोगों ने लगातार हमें समझाई कि जी कि पिरामिड्स हैं वो इजिप्ट में है। कोइंसिडेंटली जब चेक किया तो पता चला पिरामिड्स पूरे वर्ल्ड में है सब जगह ये मिस्ट्री, और है भी एक ही लाइन और एक ही उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कभी मैच करके देखना, वो भी एक ही जगह है। एक और चीज बहुत यूनिक सी पता चली कि हमें तो 10,000 साल पहले ही पता चल गया था कि सैटर्न या हमारे शनि की स्पीड कितनी है या जुपिटर की स्पीड कितनी है। तो आज उन्होंने टेलीस्कोप और इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें लगा लगा के क्या हमें नई चीज बताई, हमें वो नहीं समझ में आया। और वन क्वेश्चन टू एवरीबडी, आप सब में से किसी को ये बात, अगर किसी को जो आप सब सुन रहे हैं, एक चीज देखिएगा, पहला जहाज यानी एरोप्लेन इंडिया में उड़ा था राइट ब्रदर्स से बहुत पहले, जिसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं और पूरे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट भी हैं। ब्रिटिश एरा में बॉम्बे चौपाटी बीच के ऊपर उड़ाया गया था। तो फ्लाइंग टेक्नोलॉजी हमारे पास हमारे पुरान एक वेदांगना ने हमें दी थी, जिसको हिटलर ने अपनी पूरी टीम भेजी थी यहाँ पे पढ़ने के लिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एंड लास्ट क्वेरी, जैसे अभी निशा को ये वाली मिली है, मैं आप सबको एक क्वेरी और देने की कोशिश करता हूं। आप जरा पता करिएगा हम मून के ऊपर कब लैंड करें। और मून इतना क्लोज है हमारे, अब उस सालों से लेके अब तक, आई थिंक 1973 था, 2 या 3 में हम फर्स्ट टाइम मून पे लैंड करे, और मून हमारे पड़ोस में है, और आज तक हम मून पे दोबारा नहीं गए। लेकिन हाँ, मार्स पे जा रहे हैं, मून पे नहीं दोबारा गए हैं, जो हमारे पड़ोस में है। हमारे से उसकी ग्रेविटेशनल बहुत क्लोज मिलता भी है, चीज भी है, कोशिश करें तो शायद हम वहां कुछ बना भी लें। तो इस क्वेश्चन मार्क पे भी जरा सा सोचना कि ये कैसे कि मून के पड़ोस में हम दोबारा ही नहीं गए इतने सालों में। हमारे तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मार्स पे जा रहे हैं, मून तक तो हम कूद के पहुंच जाते, हम नहीं गए। तो देर आर मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट सपोज टू नो एज अ नॉर्मल ह्यूमन। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द आइडियोलॉजीज, मतलब थॉट्स, what are our karmas which are supposed to be delivered out here, and how we should work towards and focusing on living in this life between B and D, that is birth and death, by using the word C, which is choice, and delivering or getting for ourselves joyfulness, happiness and peace with the contentment. This is our purpose of life. So just try to focus on it. All the other questions, just send us the direct messages. I'll pick up the topic in the next session. We are already late today, and we'll pick it up in the next session, and I will try to answer as many as possible related to how astrology can affect our day-to-day life, and how we can use astrology to change over our life or get the answers or remedies using the day-to-day life techniques or life hacks out of it. That's what will be the focus on it. Thank you. Thank you, sir. Thank you.